मॉर्निंग एंड ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून। डीन साहब के सामने अंग्रेजी में बोलने में थोड़ा सा डर लगता है। मैंने बोलिए, उर्दू बोलिए क्योंकि आज की विचित्र स्थिति है। इस मंच पे दो लोग हैं। एक तो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विष्णु विश्राम जी, जो हिंदी खूब समझते हैं, थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम है, और डीन साहब है जो अंग्रेजी खूब समझते हैं, बहुत समझते हैं, लेकिन उन्होंने प्रण किया है कि नहीं हम बोलेंगे नहीं। तो विद दिस लाइट नोट लेट मी वेलकम ईच वन ऑफ यू। आई एम वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू वेलकमिंग पीपल। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विष्णु विश्राम जी का स्वागत करना चाहूँगा। सर हमारे गुड ओल्ड फ्रेंड, आराम से बैठे हुए हैं। जब हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो दो बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं। एक तो अमेरिका में जो डायस्पोरा रहता है, और दूसरा जो गिरमिटिया डायस्पोरा है। डॉक्टर विष्णु विश्राम, ही रिप्रेजेंट्स बोथ। इनके एंसेस्टर्स, इनके जो वंशज थे, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है whether they were from आजमगढ़ और गाजीपुर, and I think they were from both the places, आजमगढ़। तो यहीं से गए हुए थे, गयाना गए हुए थे, और 1960 और इनकी हेडशिप का जो भी इवेल्युएशन हो, उसका एक पार्ट ये भी है कि वो कहे आप कर लीजिए ना, साइन उसे करा लीजिएगा। तो जैसे भी मैंने कहा कि डॉक्टर विष्णु विश्राम जी आ रहे हैं, उन्होंने पिछले वाले प्रोग्राम की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि इंश्योर करिए। मालवीय जी को माला पहनाते हुए सभी लोग, ये माला जा रही है। नहीं अच्छा नहीं, ये बदतमीजी नहीं। बिंदा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा और प्रोफेसर अजय प्रताप सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। एक साइड तो हो जा, एक साइड हो जा भैया, व्यू नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। रात तक याद था कि आदरणीय विश्राम जी आने वाले थे, मुझे मिलने की उत्साह थी, उत्सुकता थी, लेकिन सुबह होते होते इतना झंझावात था कि मैं भूल गया। विष्णु से मेरा संबंध 2014 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऐतिहासिक विजय दर्ज किया, और पहला ही भाषण में कहा था कि दुनिया भर के जो हमारे प्रवासी लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के सदस्य, वहीं से खेल शुरू होता है। ओह माय गॉड। और उसके बाद आपको याद होगा कि काशी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत बड़ा कार्यक्रम था देश में। काशी में तो पहली बार ही हुआ था, और उस समय भी विष्णु जी बहुत सक्रिय थे, थोड़ा हमारी लिहाड़ी भी लिए थे। एक प्रोफेसर लोग मांगने बहुत, लेकिन दोष हमारा था, इतिहास विभाग का दोष था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि वो सेंटर नहीं बन सका, ठंडे बस्ते में चला गया। उसकी पीड़ा, उसका कष्ट आज भी मुझे सहता है जब कोई विश्व प्रवासी आता है। काशी में प्रवासियों की भीड़ है। जब से काशी कॉरिडोर बना, दुनिया का कोई ऐसा भारतीय नहीं जो यहाँ नहीं आना चाहता। लाखों लोग प्रतिदिन, 10 लाख लोग आ रहे हैं, 10 लाख लोग जा रहे हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बना, देश भर के भारतीय प्रवासियों का तीर्थ स्थल बना। न केवल तीर्थ स्थल बना, बल्कि सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का एक ऐसा सूत्र बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसने देश भर के फैले भारतीय प्रवासियों के मन में जगह बना दी। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन के तैयार होगा, और तब प्रवासियों का जलवा आपको दिखाई देगा। विश्राम जी से बहुत पहले कई बातें हुई, इन चीजों को नहीं बताना चाहता, ये भी बातें हुई थी। उस समय सब सपने थे, लेकिन आज सपने साकार हुए। ये जो सांस्कृतिक क्रांति है, सांस्कृतिक उद्भव इस देश में हो रहा है, चाहे जिस रूप में हो रहा है, वह सांस्कृतिक उद्भव का आधार आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है,
राजनीतिक भी है, सामाजिक एकता का सूत्र भी है और राष्ट्रीय महामानव बनने का एक प्रक्रिया है। भारत में इस समय अमृत महोत्सव चल रहा है। पंडित दीनदयाल पीठ ने पिछले 2 साल प्रवासियों को सम्मान, गौरव, अधिकार दिलाने के संघर्ष के लिए मैंने अभी तुरंत का तुरंत निश्चय किया, औपचारिकता पूरी कर दूंगा। मैं आदरणीय विष्णु विश्राम जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमृत महोत्सव सम्मान से सम्मानित करता हूँ। नहीं पाया, काशी में ही रह के घूमते फिरते रह गया। सुनता हूँ कि विदेश में बड़ा भारी चलवा है, बड़ा उफान है, विकास है, न जाने क्या क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जा नहीं पाया। मुझे लगता है कि हमारी पूरी दुनिया बनारस में झुकती है और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया बनारस के कदमों में झुक रही है। इसका मुझे गर्व है कि इस कार्यक्रम में घनश्याम जी से आज्ञा लेते हुए, केशव जी से आज्ञा लेते हुए, इतिहास विभाग के वीर पुरुषों और महापुरुषों से आज्ञा लेते हुए, मैं आज्ञा चाहते हुए मैं आदरणीय विष्णु विश्राम जी को आज पंडित दीनदयाल पीठ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय का एक चेयर है, पीठ है, उसकी ओर से मैं उन्हें चलो टांगे ये चुप होता है। हाँ नहीं, मेरे से परसों से ही बात हो रही है कि जी तो anyway, let's do some serious business. हम लोग इतिहास One of the reasons I went to see was about diaspora issues, and so I am very pleased that diaspora is now being introduced in this campus, and it so happens under his tenureship as head of this. So all those nice, wonderful things have been said about me, and I feel very honored. And I think we're over generous. I'm not one of those people who's looking for titles and fames and awards and honors. I wouldn't refuse them, but it's not something that I seek. Sometime about 3-4 months ago, a friend of mine, I'm from Guyana, and I'll talk a little about that in a few minutes, from Trinidad phoned me and he said, Vishnu, I would like to do a biography of you. And I said, I'm not interested in a biography because it will not serve me any purpose. No. People need to know your work because you are doing work not only about your own academic studies, but you're involved in so many other activities with regards to the people of Guyana, of Trinidad, other Caribbean islands, and then the United States as well. And then I traveled extensively to other places, and I do, whenever I can, I try to do social work. To me, social work is far more important. And after that, I was weaned away or wooed away by friends of mine that I should study political science since I'm so actively involved in political activism. And so I ended up another year in undergraduate studies to complete the BA requirements in political science so that I could gain entrance into the MA program in international relations. And I did. So when most students would finish their BA in 4, mine was in 5, but I ended up with 2 degrees. And so I ended up doing, I got entrance into the MA. And then I went on and did economics and history and sociology and political science, comparative political science, international political science, American political science, getting multiple PhDs. So perhaps I might have been the only one with as many PhDs
and postgraduate MA degrees. Also in educational administration. So, the topic for today, old versus new. I bring that up because when I went to City College to study, in September of 1977, that's when the school year begins. So there was a poster on one of the walls, and I was looking to go to some activity, some kind of club. And every group of students, regardless, well, every nationality, had a club. And on the wall, I saw that they were not given full-fledged citizenship. All of this took place post-65. So we had our, and Guyanese did not come to the United States. Trinidadians, Indo-Trinidadians, even black Trinidadians, West Indians were not allowed until post-1965. So this is where the encounter took place in the 60s. And tension remained, but it has narrowed over the years because the nationals from India get to understand us much better, who we are, what we are, and we understand them much better as well. When I came to the United States, and from my reading as well, for me, you're from India. Once you are from India, you're Indian, regardless of whether you are a Bihari, a UP Wala, Gujarati. But when you are in the United States, you become a Gujarati, you become a Bengali. You're no longer Indian. What are you? I'm a Bengali. I'm Gujarati. I'm a Sindhi. And so we, the old diaspora, well, we are Indians. We don't know anything else, but we are Indians. So this, and so most of us, we couldn't quite understand that. That they have all these quote-unquote ethnic differences within India itself. And only if you are a specialist in Indian affairs like me, you would understand the differences and the tensions between the Tamils and the Northerners and so on. And I couldn't speak Hindi, but a few friends of mine spoke Hindi, and he was so impressed. And I think Atal himself is a scholar in linguistics, as was P.V. Narasimha Rao. I think P.V. spoke French, Spanish, a number of languages. P.V. Narasimha Rao. Yeah. He was also quite impressed. So whenever prime ministers and presidents, in fact, I met the President Ramnath Kovind when I was in Suriname a few years back, and he himself from China, or at least to calm China anyway. Professor Gancham, I think that gives a brief synopsis of old versus new, and we'll open the floor for questions. I didn't expect for it to be so, to take that much time, but I do want to say, for me, it's bad news that Professor K.K. Mishra would be leaving, and I say that, I mean, if you take a look at him, he's a dynamic, lively, very strong speaker. So I'm jealous of you. हमने एक आपसे छोटा सा निवेदन किया। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से आपकी वार्ता होती है, सब कुछ पता है। एक चीज पता है, मेरा व्यक्तिगत इशारे ऑडियंस से निवेदन है आपके सामने कि आप संकल्प लें और प्रधानमंत्री से बात करें, मेरा नाम लेके बात कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी में जो पाइपलाइन में डायस्पोरा सेंटर का सब पड़ा हुआ है उसको रिलीज करें और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डायस्पोरा सेंटर को I believe when I first met him, we were talking about, I went to his home. I was looking for him in his home. And he was there to give me a very warm welcome reception with Pawan Saab. And then his brother joined us as well. My interest is an Indian Diaspora Center. Modi ji went to Trinidad, I think it was in the year 2000. He also visited Guyana briefly, a couple of days. I wrote about this in this journal that you and your brother put together. Yes. It's a wonderful journal. By the way, when is the next issue? I hope you
people have not answered. Financial problem, sir. We are You are the dean. You are the dean. सर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बेकार ही है अपना No problem. ऐसा झंझट नहीं. Right. So, I was very fortunate to meet Moni a few times. In fact, I was invited at Bangalore, and an all expensive. I gave a talk yesterday, and immediately happened. He was switched from that ministry, I think, to environment or one of those, and now he's completely out of the job. For what reason, I don't know. So I don't know who to approach now. I think we have a minister of education now. He's no longer in charge. Yes. So it will be my mission. Sevak of Narendra Modi. You call Narendra Modi only. Dharmendra Pradhan is coming. Okay, I will do that. And प्राप्त करना हमारा अल्टीमेट गोल हो सकता है, लेकिन हम उसका इंतजार किए बगैर भी पठन पाठन और रिसर्च का काम करते रहेंगे। इससे पहले मैं ये फ्लोर जो है क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करूं। जस्ट So this Indian identity, the Indo-Caribbean identity, not necessarily the kind of treatment we got that was very helpful. Even anyone would have human being should have welcomed in that time. I agree. Not being Indian, but this identity, even Indo-Caribbean also, their identity, there is some culture because it is not fixed, even here in India. So firstly, multiple identities there. Secondly, identity is not fixed, it is constantly changing, and this change happens because of interaction, and this interaction is constantly happening. And that is why if anyone is denied entry or is denied, so that should not be taken in a different way. It should be taken that every human being should behave properly with other human beings. I agree. So that should be this. And diaspora, sir, I mean, explored of international politics, but unfortunately, I have been focusing more on nuclear proliferation, strategic interests, etc. So diaspora is new to me, that is why I have not had much to say about it. But again, in the presentation, there have been successive wave of migration for me. With the benefit of associating with Professor Hisham for 18 years and in the issues of diaspora, I'm very fascinated, although a bit confused about what happens to the ancient history of the archaeology of the diasporic countries. To what extent diasporic academics, diasporic academics engage in the say prehistory or early history or archaeology of the diasporic countries. To what extent is that of interest in curriculum? I am not aware of anyone, not only Indians, but academicians of other groups who have studied the archaeology of the societies where we are settled. Now, there were quote-unquote the indigenous people in those places. They are American Indians. We call them Amerindians in Guyana. And in Trinidad, they're called Taínos and Arawaks and Caribs and so forth. I didn't study these fields, so I don't know how to answer the question, but in all my readings and in my study in high school and so forth, I have not come across any Indian names that who have done diasporic studies of us and who also did diasporic, who have also done archaeological studies. As I mentioned before, That's what I wanted to know. I mean, does it work out practically that the indigenous academics who deal with archaeology and prehistory and Indian academics there who deal with modern history? I mean, does that sort of work out practically like that, or there's free movement? From my readings, the people who have studied archaeology and the native people are from the United States, Canada, and England.
I don't know of any African scholar. There might have been one African scholar who studied that field. है ना, जिसको कहते हैं कि इस एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस है ना, ये सतत चलता आया है। जैसे सर ने अपने लेक्चर में बताया कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारत से कुछ लोग कनाडा गए और अमेरिका के कैलिफोर्निया गए, उनको नागरिकता नहीं दी गई। बहुत मुश्किल दौर था। जब ये लोग गयाना और त्रिनिदाद में परेशान थे तो इंडिया से जाने वाला व्यक्ति भी अमेरिका और कनाडा में उतना ही परेशान था, ठीक है ना। तो वहां से लेकर के 65 तक का एक इतना इम्पोर्टेंट पड़ाव है कि 65 में अमेरिका ने अचानक अपना द्वार जो है पूरे दुनिया के पढ़े लिखे लोगों के लिए खोल दिया, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो जो जब लोग इंडिया से बड़ी संख्या में वहां पे गए तो इंडिया से अच्छा संबंध तो चाहते ही थे। फर्क आया है 1991 में, अच्छा या बुरा, जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया। उसके दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। एक है 2005, जब मनमोहन सिंह, जिनको हम देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, समझ रहे हैं, उनके समय में न्यूक्लियर डील हुई थी। मनमोहन सिंह, तब अमेरिका के लोगों का और अमेरिकन डायस्पोरा का इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दिया। ये कैटलिस्ट का काम किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्ते में जो गर्माहट आई है उसका एक बहुत पॉजिटिव असर हमारे संबंधों पे पड़ा है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, ये एकेडमिक स्पीच है। अब जो हाउडी मोदी वहां हुआ था टेक्सास में, वो तो ट्रंप महोदय के लिए हुआ था, है ना? और ट्रंप महोदय हार गए और अमेरिका कहे कि भाई आपने हमारे यहाँ ये क्या किया। ट्रंप महोदय जब जीते थे तो डेमोक्रेट्स ने 4 साल तक ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं माना था। उन्होंने कहा कि रशिया ने प्रभावित किया। पुतिन महोदय तो नहीं गए थे, प्रधानमंत्री तो गए थे। इसलिए देखिए, जो छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ये संबंधों में गर्माहट के लिए होती है और बड़ा जरूरी होता है। वो गुडविल जेस्चर है। इसके बाद भी जो आज के राष्ट्रपति वहां के हैं, जो बाइडेन, उनसे भी उतने अच्छे संबंध हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, भारत के राष्ट्रपति तो उनके लिए प्रचार प्रसार करके चले आए, है ना। है क्या कि जो हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है और जो हमारी रियलिटी यहाँ है, जैसे रशिया के ऊपर हम निर्भर करते हैं लगभग 70% आर्म्स रेगुलेशन के लिए। अमेरिका को पसंद हो या ना हो, हमारी सुरक्षा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम रशिया से अपने बेहतर संबंध रखें। लेकिन साथ में यह है कि अगर इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल पावर समझता है और दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, तो दुनिया के पास ये राइट होना चाहिए। जैसे लोग अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पे मिलिट्री रूलर्स को प्रमोट करता है, वैसे वो इंडिया को भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कर रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरते हैं, लेकिन दुनिया के सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र का जो कंसर्न है, इवन बीइंग द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया उनके अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा। इंडिया को कोई बहुत ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है ना। तो प्रोफेसर टीपी सिंह सर यहाँ पे थे, वो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। Jordan, going way back in the 30s and 40s and 50s to my parents and so forth. So the world itself is changing. Whether it is being done for American marketing or not, I don't think it's really important anymore. The Indian community is being accepted. In the 60s and 70s, we were not accepted because we had very, very bad publicity. Oh, India was mass starvation, hunger, poverty, famine. But today we're feeding the world. We're exporting wheat and so on and so forth. So it's different today, and therefore we should welcome these changes that are happening, whether it is for marketing purposes or not. And our pocket is deep. What do we do with $120,000? We have to spend it, and the more you spend, it's better for the economy as well. We all benefit that way.
I do recognize some faces. I think the last time I spoke might have been 3 years ago, or 2, I don't remember, but you were there, and I believe you were there as well? No. Okay. So a few people, I recognize their faces, so I thank you for coming. I didn't get to formally introduce Pawanji, Pawan Upadhyay, who's from Azamgarh. Oh, you did. And Pawan helped me a lot to visit many gaos. He tried to trace roots of so many people, and he himself learned from it. Always relate his experiences to me, and I learned a lot from it as well. With him is his very, very charming wife, who, whenever I go to Azamgarh, she provides great hospitality to me, as well as to my wife and other guests who go to their home as well.